These people from the land of Shah Abdul Latif Bhittai, Bhagat Kanwar Ram and Chain Rai Sami, surrendering to the ecstasy of Sachal Sarmast's Kalam. Who knows better than them the message of love, peace, harmony and humanity that the Sufi saints struggled to spread in the subcontinent? Yet, these are the people torn by petty conflicts. So often the individual squabbles and personal grudges magnify into tribal conflicts, taking all and sundry in their folds. Abandoned homes, schools and standing crops are a silent witness to the suffering of these nameless, countless faces. These conflicts had been far and few prior to the 1980s. Political scenarios at national and international level, the prolonged martial law regime and the Afghan war aggravated the situation, exploiting and manipulating it. हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप रही, डिक्टेटोरियल पीरियड्स रहे और उन डिक्टेटर्स ने इन कबीलों को हवाएं दी. आपने देखा ज़ियाउल हक के टाइम में ये हुआ कि कोशिश करके यही हुआ कि कबीलों को आगे लाया जाए. नहीं, जनरल ज़ियाउल हक पे ही मौकूफ़ नहीं है. नहीं, किसी हुकूमत ने भी सिंध के लोगों को अपने कबायली और जागीरदारी निज़ाम से निजात दिलाने की कोशिश नहीं की. ये जो क्लैशिंग ऑफ कल्चर है, हथियारों की बहुतात, एडजॉइनिंग हम बलूचिस्तान के साथ हैं और अफ़गान वॉर जो है मेन जो बेस ग्राउंड है, मैं समझ रहा हूँ वही है जिसमें हथियारों की बड़ी आमद रफ्त रही है. जहाँ पे झगड़े होते हैं, जो ये ट्राइब्स होते हैं, वहाँ पे असला बहुत आ जाता है, लोगों के पास वेपन बहुत आ जाता है और जराइम पेशा लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं. और ऐसे ऐसे लोगों के पास हथियार है जिनकी कोई, मैं समझता हूँ, कोई हैसियत भी नहीं है उन बेचारे की, खरीदारी हैसियत नहीं है, लेकिन वो अपने बैल पता नहीं जो है वो डोर डंगर बेच के और अपना कैटल बेच के वो कहते हैं कि भाई ठीक है, ये हमारे पास आम है हमारे पास. The indifference of the state institutions, the police, judiciary and media further deteriorated it. खराब किरदार हुकूमत का है. हम बेराज करते हैं, बड़े ऑफिसर हमारे साथ चलें, उनके पास सब कुछ हैं, फोर्स हैं, हथियार हैं, उसको जोरबार करें, भाई ये झगड़ा हुआ हम ऐसे करेंगे, तो झगड़ा नहीं होगा. जिसमें इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो बड़ा कमज़ोर रहता है हमारा, उसमें हम उनको पकड़ते नहीं हैं. कबीलाई झगड़ों को हम ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि कोई क्राइम ही नहीं है. पोइ ये ॿई शयूं गॾिजी पई, हिकिड़ी करप्शन, ॿी सियासत जी इन्वॉल्वमेंट. मतिलबु पुलिस में जेका इन्वॉल्वमेंट थिए थी पई, पोइ उन जे करे को एक्शन कोन्हे. जॾहिं एक्शन न आहे त पोइ क़बाइली जेको झगड़ो थिए थो पियो, उन में तेज़ी वधंदी रहे पई. दो ट्राइब्स में झगड़ा होता है, खुदा न खासा किलिंग्स हो जाती हैं, तो दोनों तरफ से पार्टियां मोर्चा बंद होती हैं. पुलिस का रोल इन अ वे थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज इन दी पास्ट मैं ये भी देखने की कोशिश करता हूँ कि पिछले क्या होता रहा है. जब पुलिस किसी एक तरफ छापे मारती है तो दूसरी पार्टी पुलिस पे इल्ज़ाम लगाती है कि पुलिस इज़ टेकिंग साइड्स. दैट्स वाई पुलिस हैज़ टू सिंपली अपने खोल में रह के काम करना पड़ता है. और सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि वडेरे भी ये चाहते हैं कि इसको कबायली रंग दिया जाए, क्योंकि अगर कबायली रंग न दें तो आम कानून के तहत उस पर अमल होगा. नहीं, पुलिस वाला को तफ्तीश करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मामला जाएगा. नहीं, तो पुलिस वाले चाहते हैं कि इस दर्द से बचने के लिए बेहतर ये इसको कबायली झगड़ा लिख दो और फिर लोगों से कहो कि भाई सरदारों को जमा करो और तय कर लो, तो वो अपनी कार्रवाई से जो उनके फ़राइज़ हैं उससे बच जाते हैं.
वडेरों का भी इसमें इंटरेस्ट मालूम होता है, और ये है कि वक्त के साथ साथ उनकी जो सोशल पावर है वो कम हो रही है। उसको आप मुंजमद नहीं कर सकते, खा कुछ कर लें, दुनिया आगे की तरफ जाती है। कोर्ट्स का हमारा जो निज़ाम है कानून का, वो इतना पेचीदा है कि लोगों को टाइम पे इंसाफ नहीं मिलता। कोर्ट इंसाफ की कोशिश करते हुए भी उस तक नहीं पहुंच सकती। इस वजह से फिर वो क्या करते हैं, लोग अपना हाथ में उठा लेते हैं, गन सब अपने हाथ में उठा के फिर जो है वो फायर कर देते हैं। एक के बजाय दो मर गए, दो के बजाय तीन मर गए। हम ये नहीं लिखेंगे भाई तनाज़ा दो लोगों के बीच में हुआ और तो मीडिया पे आ जाएगा भाई मर और मीरबर का झगड़ा शुरू, एक आदमी कत्ल। तो वो जो दूसरे ज़ातों के होंगे वो अपनी जगह पे अलर्ट, उनको अपनी जान का ख़तरा महसूस होगा। कुछ लोग मोर्चों में चले जाएंगे, कुछ लोग जो है फिर यानी कि एक मामूली जो दो लोग लड़े हैं अपने रुपए पैसे के लिए, उस मामूली बात को या उस एक शख्सी मामलात को जो है इज्तमाही बनाकर, कौमी मामलात बनाकर और कौमी कत्ल करके पेश करके भी फलाने ज़ात ने मर ने जो है जतोई को मार दिया। ये नहीं कि भाई एक फ़र्द ने फ़र्द को मारा है। The destruction and desolation brought about by the so-called tribal conflicts is almost always out of proportion with the conflict. थोड़ी सी एक मिसाल दूँ, मेरे करीब दो कौमें थी और बड़ी ताकतवर कौमें थी, ईसानी और कम्बरानी। ये खीरा जो आप इसमें लेते हैं सलाद में, दो खीरों पर 42 कत्ल हुए। एक बच्चे ने आके खीरा तोड़ा, दूसरे उसको लोगों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने उसको थप्पड़ मारे। थप्पड़ की बजाय उसके जो भाई या बाप थे वो आकर उस जो बूढ़ा आदमी था उसकी दाढ़ी नोची। उस दाढ़ी नोच पर दो आदमी उसके मार दिए गए। फिर उसने 4 मारे, फिर 4 से 8 हो गए, बढ़ते बढ़ते 42 कत्ल हुए। ये लखन और जो है मीरबर तकरार शुरू हुआ, वो 10 रुपये की बात पर यानी शुरू हुआ, उसमें 5-6 बंदे जो है मारे गए। The newspaper analysis of 8 districts in Upper Sindh during January 2010 to June 2012 shows a worse law and order situation of the area. A total of 242 cases of tribal conflict have been reported, which claimed 722 precious lives, while 548 were injured. A conflict in Kot Mir Muhammad, Taluka Kingri, which began with disputed agricultural land worth not more than 200,000 rupees, has played havoc with the social and economic lives of the 3 tribes involved. बस साल पहले तो यह है आदमी की जान चली जाती है। 13 झगड़े से कोई वास्ता नहीं, कह रहे नारे जो है, कह रहे जतो ही, कह रहे मीरा नहीं, कार्ड दिखा डर झगड़ा आहिनि त उहे काॾे निकिरनि, काॾे वञनि, का छा कम आहिनि, छा खाइनि। पोखनि वारा बि जीअं झगड़ो थी थो वञे, हाणे खरोसन ऐं हिननि जो थियो आहे, पाण में खरोसन जो थियो आहे, उहे पोखनि ते हाणे फेरिंग हले थी पई, पोखां बंदि लॻियूं पियूं आहिनि, पोखनि में माल था चरनि पिया, इहो ज़ुल्म थो थी वञे नी। It has taken 22 precious lives from both sides, including that of 2 women and a 12-year-old girl. More than 500 families of conflicting communities have been displaced. 5 माण्हू पहुची विया, 3 लेडीज़, मुंहिंजे घरवारीअ खे बि पेट थियो। हे जहिड़ो शुरू थियो उते फेरी हिननि अची घर जे मथां चढ़ाई कई असांजे छत जे मथां चढ़िया त मां सुतो पियो हुउमि, नंढड़ो पुटु बि सुतो पियो, घरवारी बि मूंसां गॾु सुती पई। त पाड़े वारे हकल कई त चोर मां ट्रप ॾे जो थियुमि त ट्रप सां हुननि बस्ट जो हलाए त हीअ गोली माए लॻी, हीअ लॻी अची त मुंहिंजे घरवारीअ खे बि हीअ लॻी, उहा बि थॾे ते मरी वई। नंढड़ी मुंहिंजी हिन सां गॾु सुती पई, उनखे पेट में लॻियूं अची ते भाटियो सुतो पियो, उनखे पोयों लॻी वई। मुंहिंजो वॾो भाउ भॻो आहे पियो, उनखे जीअं जो मथां बीठा भॻो आहे पियो मारे, हुन अकल कयो त मुंहिंजे हुन भाउ त जे हे मरी वियो, त जो भॻो आहे पियो त उनखे अॻियां भॻी हुन बस्ट ऐं सीने में चढ़ंदी। Date palm, one of the main produce of Upper Sindh, a source of livelihood for thousands of rural households, is a significant contributor to the national economy. And yet, the conflicting tribes mercilessly burn down these standing crops, unnoticed by the state agencies and the media. खजूर की दरख्तों को आग लगा दी गई है, और अब जो हमारी खजूर की सीज़न है फसल की, अब वो है ये जो है नर डालने का वक्त आ गया तो हमें नर डाले नहीं दिए जाते।
तकरीबन 50 लाख की खजूर जो है वो हमारे फ़ी दरख्त हमारी 1500-1600 दरख्त जाती है फ़ी दरख्त, तो हमने 500 में बेच डाली। 400-500 एकड़ बिल्कुल ज़मीन गैराबाद है, ना कुछ खाने के लिए, मदआशी तौर पे हम बिल्कुल मुश्किलात पे वक्त गुजारते हैं। कोई कटाई के बहाने उसको रोज़गार मिलता है, किसी को थ्रेशर करने के बहाने में मजदूरी मिलता है, अब उनकी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है। मजदूरी लाइ हेतिरा नंढड़नि था छोकिरा जेका आहिनि उहे वञी तगारी पोलियो करे अचनि, बाक़ी जंहिंजा नाला सभु ॻोठ अचनि उहे सभु ॻोठ में चुप। ॿार बि वञनि था स्कूल में, थैर थियनि था त वीचारा निकिरी अचनि, जा लिकी पवनि, जा खजी धड़नि में, जा काथे भॼी। So education is the casualty. In a context where little boys and girls hardly have the opportunity to pursue education, burning down schools and looting them further seals the fate of these aspiring youngsters. ये रिवायत है कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, ये ऐब है, ये क्यों पढ़ें, ये इनको क्यों जो है वो माशरे में आगे बढ़ा जाए। फिर ये गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कायम हुआ तो हमने लोगों को तरगीब दी कि भाई आप अपनी जो है वो लड़कियों को स्कूल में दाखिला करवाएं। तो अब जो है माशाल्लाह इतना मशहूर हो चुका है कि 160 लड़कियां जो है वो इस गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं। फायरिंग करते हैं तो स्कूल खुला हुआ होता है तो वो उस्तादियाँ कहती हैं कि भाई ये फायरिंग है, हमें तो डर लगता है, हम पढ़ाने नहीं आएंगी। असांजी तालीम ख़त्म थी वई हाणे असांजो जहिड़ो आहे जतोई नारेजन जो तकरार आहे पाण में, हाणे 5 साल थिया आहिनि, असांजा छोकिरा जवान थी विया आहिनि, उनखे कुझु बि न आहे, तालीम ख़त्म थी वयूं। जो हमारे एरिया में स्कूल है, काफ़ी स्कूल है, तकरीबन बूटा पंजाब स्कूल है, वो झेड़े की वजह से बंद, आडो नारज है झेड़े की वजह से बंद। ये स्कूल सरदार फैज़ मोहम्मद नारज जो है प्राइमरी स्कूल, अभी कंप्यूटर का दौर है, अभी ये स्कूल बंद है क्योंकि तो भाई ईडियो से मिलो, भाई तकरार है, झेड़ नारज जतों का झेड़ा है, खरोसों का झेड़ा है, इधर नहीं जाना है, कोई मास्टर आने के लिए तैयार है। असांजी दिलि चवंदी आहे पर असां भट नथा वञी सघूं, असांजो हिकिड़ो मसइलो थी पियो, उनजे करे असां नथा होॾे वञी सघूं, हिते पढ़ंदा हुआसीं, हाणे हितां पढ़ाई ख़तमु थी वई। The conflicting groups continue to occupy each other's land forcibly, breaking into opponents' houses, firing indiscriminately, killing innocent people, terrorizing them, snatching cattle, and thereby disrupting the normal life of ordinary people. किसी को ड्यूटी है, वो ड्यूटी छोड़ के घर चला गया, जो खेत है खेत को वो नहीं संभाल के, जो संभाल के जाता है एक दिन वहीं, दूसरा वहीं, तीसरे दिन औलाद मर जाता है। Where once accustomed to celebrations, the ongoing conflicts have stolen the happiness of these simple souls, robbing them of their joy and even sorrow. इस 2 साल के अरसे दौरान हमने अपने गांव में कोई खुशी नहीं देखी, क्योंकि हमारे शादियों के दौरान इकट्ठा होना हमारे लिए जो है बायसे मुश्किल है, क्योंकि हमें हर तरफ दुश्मन का ख़तरा होता है। न ताड़ी न राग न लाडो कुछ भी ना है, चिपड़ो करे नेका पढ़ंदासीं। न तो गमी के दौरान अपनी आबाई कब्रिस्तान में किसी मैयत को दफन कर सके हैं, 15-20 किलोमीटर वो गाड़ियों में लेकर वहाँ जाके दफन करके आते हैं। मौती थे या शादी थे तो मां कुराड़ी हिक वञा, बस कुराड़ो कुराड़ी बस, जोनियूं न निकिरंदा। हाणे बसि खेॾण बि बंदि थी वियो, असांजो खेॾण बि हाणे नथा, उनजे करे असां हेॾे पंहिंजे हिन वेड़े ॾे बि नथा अची सघूं, उनजे करे जो बो मथां धकु हणी वठनि, उनजे करे असां नथा अची सघूं। The healthcare facilities in these areas are far and few. These conflicts further deprive the underprivileged and vulnerable of what little they have access to. छॾियईं कोन था, बसि दर्द सूर बीमारी थिए पोइ असां ॿार पंहिंजो सिविल में पाण खणी था वञूं, ज़ावा माण्हू औरत मर्द कोई नथो हले। हिकिड़े पुट जो शहज़ादो पुटु बीमार थियो, मां कुराड़ी खणी अस्पताल में उते फौत थी वियो, मां पाण रोंदो पिटंदो खणी आयसि, कम नाला बचनि जा दुश्मन जा भव नाला ॾिना पिया आहिनि, कीअं मर्द माण्हू निकिरनि, कीअं बचनि जो हीलो वसीलो कनि, रोई पिटी मां कुराड़ी हो मोबाइल ते चाढ़े ॾिनो अथनि, मां घर खणी आयसि। The so-called conspiracies continue, and so does the suffering of thousands of people. A conflict in village Ghulam Jafar Tanyo,
where two tribes accused each other of kidnapping their men, has claimed 3 lives. 75% of their land remains unattended and uncultivated. The whole village has to migrate due to this conflict. Women and children suffer. Their men suffer. फसल था सारा छोड़ के गया था ना, गांव में बड़ा खतरा था, इसलिए कोई रकम नहीं थी, जो जानते कपड़े थे वही लेके गया था। बच्चे की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, आदमी नौकरी छोड़ के गए, कोई मजदूरी की, फसल की, सारे छोड़ के गए। बड़ी तकलीफ़ आई, पूरा 1 साल बाहर निकल गए। बाद में आए थे इधर, ये पूरा फसल तबाह हो गया था, वो खा के गए थे। केलू का फसल था, खजी का था, अम्ब का था, गांव पूरा बिल्कुल ख़त्म करके गया था। असां मुश्किल सां रुगो सिर वठी वियासीं, सुबी पराई ज़ाति उन में उते पहुतासीं वञी। असां 12 महीना उते वेठासीं, पर वॾी मुश्किल सां असां चऊं पिया रुगो अलाह साईं को अमन करे त असां पंहिंजे घर वञूं। असांजा ॿार बि रड़ियूं दाऊं कनि पिया त असां पंहिंजे घर हलूं। घर ड्राहे विया, असांखे उहा न आहे जो असां चावा कयूं हाणे माल जी जा पंहिंजे। असां वॾो ॾुखियो गुज़ारियोसीं असां वक़्तु। असां न त दर पदर हुआसीं, असां हो तोखो माखो वठी जेतर असांजा बच्चा कमाई जहिड़ा थिया लिकता उन मां पुलिस मां, ते त असां तो मां वटि वठी खाऊं पिया। उते असां बीमार थियासीं, वॾियूं तकलीफ़ूं थियूं। मां त सोचे सोचे मूंखे एॾी बीमारी थी वई, मथे में सूरु न पियो छॾे, मूंखे सफ़ा असली बीमारी थी वई, जे मां रुगो राति ॾींहुं रोआं पई पंहिंजे घर लाइ, पंहिंजे माल लाइ। वो माइग्रेट कर जाएं हैदराबाद या कराची, उस डिस्प्लेसमेंट के क्या असरात होते हैं, एनी साइकोलॉजिस्ट कैन टेल यू कि बच्चा पूरा एक बचपन जहाँ से गुजारो, अचानक उसको पता चले कि मेरी दुश्मनी है और मुझे हैदराबाद माइग्रेट कर जाना है या ऐसी जगह जाना है जिसका किसी को बताना भी नहीं है, एक अनआइडेंटिफाइड जगह पे जाना है, तो उसके बेचारे पे क्या उसके जहन पे असरात होंगे। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आप बिलीव करें कि हज़ारों की तादाद में लोग माइग्रेट कर गए हैं, घर छोड़ गए हैं, उनकी तालीम, एजुकेशन, वो यानी कि वो और कोई इनको समझता नहीं कि ये IDP आलमी इदारे, गवर्नमेंट ने कभी इनको समझा ही नहीं है कि ये IDPs हैं। एक समाजी तहरीक की ज़रूरत है, नहीं सिर्फ कानून से या आइन से या किसी कहने से या तबलीग से ये मामला हल नहीं होगा, जब तक कि कुछ ऐसे इक़दाम न किए जाएं जिससे समाजी तब्दीली भी मकसूद हो। Thousands of households have been affected and hundreds have been displaced. These poverty-stricken, hungry children, women and men with hardly anything to eat and wear. Who is responsible for their plight? Why are they being denied the chance to live in peace, to earn and lead a normal life? Where are the law-enforcing agencies, the civil administration, the government, and the politicians in power positions? The answers to these seemingly easy questions are difficult to come by. For a long